नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा आप लोगों के कारण हमारी इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा, जो भी हमारे साथ उपस्थित हैं वो सभी आधार स्तंभ हैं। हम 1934वें पड़ाव पर आपका स्वागत करते हैं। जितनी छोटी छोटी वेबिनार होती हैं लोग देखना पसंद करते हैं, तो हम भी 1 घंटे के लेवल पे आ गए। और कल तो हम सैकत जी और सुपर्णा जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी दम पे कल हम 4 वेबिनार करने में सफल होंगे, क्योंकि आधा आधा घंटे की वेबिनार, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे हम लोग। तो निश्चित हमारा कल पर्सनल स्पेस डे, कंप्यूटर सिक्योरिटी डे और स्मॉल बिजनेस डे, ये 3 वेबिनार हमारी दोनों वक्ता को नमन है। और साथ ही साथ हमारे पहली वेबिनार जो होगी वो यूट्राइन फाइब्रॉइड पे होगी। तो 4 वेबिनार कल हमारी होंगी, जिससे 2000 को पूरा करने में हमें अगले महीना केवल 61 वेबिनार की जरूरत होगी, जबकि हम लगभग हर महीना 80 वेबिनार करते हैं, 80 से 75। तो सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद का दिन ही हम मना रहे हैं। तो सबसे पहला धन्यवाद हमारी ओर से आप सभी के लिए। बहुत बहुत आभार आपका सभी का, जिससे ये यात्रा यहाँ तक चलती आई। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके सतत आशीर्वाद के लिए। आदरणीय एनडी शर्मा जी, आदरणीय रामवीर शर्मा जी, आदरणीय शैकत बसु जी। वाह! मतलब आप लोग जो एक ऐसा माहौल बनाए, देखिए, जरूरी नहीं कि हमारे साथ लोग जुड़े। ये एक पहले क्या होता था, हम 20-25 आदमियों की सभा करके और उसमें सीएमई वगैरह जो भी थी वो निपटा लेते थे। उसका न तो कोई सबूत रहता था, और जिस रजिस्टर में साइन रहते थे वो अलमारी में बंद रहता था। ये मैंने जिंदगी भर देखा। लेकिन मैं सबसे पहले, आप लोगों से भी पहले, टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दूंगा कि जिसकी वजह से आप और हम मिले। ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप और हमका मिलना भी बड़ा असंभव था। कैसे हम अपने अपने घर में, अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए आज इतनी बड़ी यात्रा चला सकते थे। एक सीएमई के लिए कितनी तैयार, सीएमई तो नाम ही अभी आया, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस जो कहते थे हम, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज होती थी। बहुत बहुत धन्यवाद टेक्नोलॉजी का, मेरे आधार स्तंभों का, और हमारे आज के वक्ता सैकत जी और सुपर्णा जी का। जय हो, सभी की जय हो। मैं इसके विषय में आदरणीय एनडी शर्मा जी को उद्घाटन के लिए 2 शब्द बोलने को आमंत्रित करता हूं। फिर उसके बाद हम स्पीकर्स को बुलाएंगे। आदरणीय डॉक्टर एनडी शर्मा, धन्यवाद देना हमारी जिंदगी में कितना जरूरी है। शर्मा जी तक हमारी आवाज जा रही है? जी आदरणीय शर्मा जी, जी 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 धन्यवाद। आज थैंक्स गिविंग डे है सर। जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने के विषय में कुछ आशीर्वाद दो, 2 शब्द आपके। मैं खुला है, आवाज आ रही है आपकी? खुला है, खोलिए। बंद कर दिए आप? खुल गया ना? हाँ सर। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज धन्यवाद देने का दिवस मना रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोग हमेशा ही एक दूसरे को धन्यवाद देते रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डे के ऊपर यह धन्यवाद दिया जाए तो उसका कुछ महत्व अलग ही हो जाता है। और वास्तव में ये धन्यवाद नहीं है, ये एक ऐसी उपलब्धि है कि जो कि हम लोगों के सामाजिक, मानसिक और जो उत्तरदायित्व हैं, उन सब के लिए हम एक दूसरे को कृतार्थ कहते हैं या कृतार्थ होते हैं कि उनके ज्ञान वर्धन से हम लोग, केवल हम लोग नहीं,
बल्कि कितने जनमानस के लोग जो हैं इससे उसका लाभ उठा रहे हैं। उनका हम विशेष रूप से आभारी हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि जो कि हमारे आयोजन के लिए सुनते हैं और सुनने के पश्चात उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं। वास्तव में धन्यवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम जो कुछ भी सीखें वो दूसरों के लिए हम आगे के लिए प्रेरित करें कि उससे और आज ज्यादा लोग जो हैं उससे लाभान्वित हो सकें। हम लोग केवल लर्नर हैं। एक कोई भी चीज होती है तो हम लोग हमेशा लर्नर ही रहते हैं और ये लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो कि अनएंडिंग है। और ऐसे अवसर हमारे लिए इस बात को प्रेरित करते हैं कि ये अनएंडिंग प्रोसेस पर जब तक हम हैं तब तक निरंतर सब लोगों का आभार प्रकट करते रहें और उनके जितनी भी चीजें हैं उनको हम लोग ग्रहण करते रहें और उनसे हम सब लोग लाभान्वित होते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी का हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जो आज धन्यवाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। जय हो आपकी। हम आपके बहुत धन्यवाद आभारी हैं सर, कि आप इतनी ऊर्जा देते हैं। आपसे देख के हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। आपको देख के हम जवान हो जाते हैं, बस यूं समझ लीजिए। हम आप लोगों जय को हो। देख के मत लगता है कि अभी हम बुढ़े नहीं हुए हैं। जी जी जी। अग्निहोत्री सर, शेखर जी को बुलाने के लिए अग्निहोत्री सर का आह्वान थैंक यू करता सर, हूँ। थैंक यू। आपके आशीर्वचन मिले और मैं समझता हूँ शायद ये अंतर प्रेरणा ही थी कि हमको ये सौभाग्य मिला कि हम आपका धन्यवाद आपके घर तक देने के लिए हम पहुंच पाए। आपका ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य है। और अब जिस दिन से आपको मिल गए, आपका जिंदगी भर के लिए धन्यवाद हो गया है कि आपने हमारी संस्था को इतना बड़प्पन दिया और योग्यतापूर्ण जानकारियां देते हैं। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। और ये यूएस में, अमेरिका में ये दिन मनाया जाता है। बच्चों की आज छुट्टी है, उनके थैंक गिविंग डे में पूरे ऑफिस छुट्टी रहती है, क्योंकि साल भर आपने हमारे लिए, हमने आपके लिए जो भी कुछ फेवरेबल कार्य किए उन सबका धन्यवाद। तो इसलिए उसको उन्होंने एक दिन ही बना दिया। तो उस दिन सब एक दूसरे के धन्यवादी होते हैं। दैट्स वाई दिस इज द थैंक्स गिविंग डे सेलिब्रेटेड इन यूएस। Thank you so much, sir. Now, in same continuation, I would like to invite Dr. Saikat Kumar Vasuji. Nothing very this special to say for him, because he is master of all, and irrespective of his own field, the pleasure is that every humanitarian adjective, every humanitarian emotions and basic characteristics there, he is equipped with these all ornaments, and he would just like going to throw light over the Thanksgiving instinct, which is very natural amongst the humanity. Dr. Saikat Kawasuji, namaskar. Thank you, Agnihotri ji. Thank you to all the Sharmas. We have three Sharmas in our display to vote today. Veer Sharma ji, ND Sharma ji, Pawan Sharma जी। तो सबका थ्री धन्यवाद। मस्केटियर्स जैसे थ्री शर्मास भी आज हमें मिल गए, तो आई एक्सटेंड माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू देम ऑल। मैं थोड़ा थैंक्स गिविंग डे का थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। And by the time I finish, I have already talked to madam. She is traveling, so by the time I finish, she will be able to join. So I'll also fill in a little bit for her so that she can come and join. She's almost close to her home, she mentioned, and as soon as she gets home, she will connect with us. So ये थैंक्स गिविंग डे आया कहाँ से? लाइक आई मीन डेफिनेटली आज के दिन में वी आर गिविंग अ स्पेशल डेजिग्नेटेड डे एज अ थैंक्स गिविंग डे, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो वेरियस यूरोपियन मतलब वाइट कल्चर जहां पर भी है, वेस्टर्न कल्चर्स कंट्रीज में आप देखेंगे कि इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर द थैंक्स गिविंग डे। बट टुडे it is broadly a thanks to the society. Today it is a broadly as Agnihotri ji, Sharma ji and ND Sharma ji has very nicely illustrated, it is a way of celebrating humanity. Like for through, like it is a way of thanking the government, it is a way of thanking your neighbors, thanking your teachers, thanking your parents, everyone who has contributed to your life. It could be your spouse, it could be your friend, it could be your relatives, it could be someone who has inspired, it could be even a book that you have read in a library, and that library becomes institutional in inspiring you.
in thinking about something new, or in changing your thought process and stuff and things like that. But shortly saying that this Thanksgiving is broadly now a societal and a cultural thing that has not only been adopted in Western countries, it has been adopted almost internationally now. But where does it come from? ये आया कहाँ से रहा है? So the origin of this Thanksgiving concept was from the colonial Europeans. Once they mostly moved into other countries, particularly in North America, particularly in case of Australia, New Zealand, wherever they have moved in, when they came to this country, they confronted with the local Aboriginal people, which is similar to what we'll call as the tribal or the original inhabitants of this country. In many cases, they had like both these cultures coming together. They were not aware of one another. One was superior in firepower compared to the others. As we all know, the Europeans took over all the natives in their countries, and they ruled, and many of these rules were not very nice. This Columbus, the discoverer of America that we so highly speak upon, if you look into his biodata, the inhuman torture that he has conducted with his teams over to establish their rule. Today we have, what called the Hispanic culture or the Hispanic culture across South America. But there was a time when they came in and they took over the native people down in there. They enslaved them, and they have carried out humongous abuse and torture on them, physically, mentally, socially, culturally, economically, in any dimension that you can think about. Atrocities were conducted. They were women's were raped, they were abused, children's were massacred, various communities were wiped out and stuff. We have talked about this. But nonetheless, the colonial Europeans, when they were new to this continent, they were also helped by these natives. There was atrocities, particularly in North America, across USA and Canada, when Europeans came in, particularly the Britishers, and the others followed in various forms and part, but mostly the British. When they come in, they confronted the tribes, and in many cases, these tribes have never confronted white people, so they were very new to them and very novel to them. In many cases, in South America and many parts of North America, they were accidentally considered by these Aboriginal communities or their tribal communities as gods. They thought them these were God sent people who may have come from distant heaven, maybe carrying the messages of their ancestors and stuff. And they made a mistake, because then these people took over. And we all know, we have grown up in a colonial country where there has been 400 years of British rule. So what the Europeans have conducted, how they have looted the country, how they have abused, how they have tortured. But nonetheless, when these new people came in, it was very difficult for them to survive in this continent. North America now may look as one of the most prominent living place in the world, one of the strongest economies of the world. But at one point of time, during those ancient periods, when the pioneers or our forefathers of the Europeans first came into this country, they found it extremely challenging to survive in this land, because there was no agriculture, hunting was very difficult, that the terrain was very, very difficult. There were no roads and nothing. They had to construct their road. They used to live in the forest, and for their survival, they were actually helped in many cases by the Aboriginals. Very simple-minded Aboriginal communities, various tribes across. They actually accommodated this colonial Europe when they came in for their first time. He taught them the ways to live in the vast plains of North America, how to survive the winter, what are the essentials that you have to follow, what kind of dress codes they need to follow, what are the traditional dress materials that they wear. They shared their food, they shared their meat, they shared their space with them. And this is one of the reasons how the Europeans were able to survive, based on the help and the techniques that they have developed for so many years. They were very kind enough to pass on those technology and techniques to these strange white new people, which at that time they had no idea, had bad intentions of taking over their land, taking over their life, and marginalizing them till date. So these help that these native people extended to these Europeans during this day, they at some point of time, like from that very day,
because many of these Europeans who came were church-fearing people. They were afraid that for the hostilities and other brutalities that they have conducted, that God would punish them. Out of their good mind, at one point of time, they realized that they should be thanking these native people for the help and support they extended them, for which they were able to survive in these lands. And because of this help, they were later down the line, they were able to take over their land. But nonetheless, this nice gesture of these non-European people who were ancient inhabitants of their land, and how they helped these people to settle down in this country, and they wanted to share their resources, treated them well. This was remembered, and this is known as a kind of a Thanksgiving Day. Now the Thanksgiving Day has this respect towards the Aboriginal communities, and the help that they had extended has diluted. Like, this has almost evaporated and vanished, and it has more a cultural essence of a broader Eurocentric culture, where we are thanking our parents, the church, the society, the community, the school, the teachers, and as also the Aboriginals, to be politically correct. But it has taken a broader form, rather than that older form where the white people or the colonial Europeans who first came to this continent of North America extended their gratitude for the help which these people provided through their numerous indigenous technologies. How to make a canoe from the tree trunk, or the boats from the tree trunk, how to use the waterways, how to hunt in those atmosphere, how to butcher the animal, what kind of hairs, far spells that they get, how to utilize them, how to live out of the land. Everyone, everything that they learned and they made the Europeans successful down the line was taught to them initially out of their sheer goodness or humanitarian feeling by the Aboriginal communities to which they were exposed when they come to this country. And the Thanksgiving concept starts from there. But nonetheless, in this world that we are living in, it is so, like, every day when we get up, like, I am thankful that I'm alive one more day to continue my life, while I feel that while so many people are underprivileged, so many people are suffering from various diseases, they could not get out or possibly of their bed, or are suffering from various other challenges that is impacting their life. At least I am able to survive and get up and continue my life for one more day. So this thanksgiving sense that we have is extended to us. Like, it was mostly a Christian concept initially, that on Sunday you thank the Lord, you thank the church, you thank the services, because church was not only in those time a place of worship on the Sundays, church was also a place for social coherence, where people will come, they will exchange their sads and sorrows. If there are problems from the community, the church community will go and help that individual, whether it was a marriage, whether it was a construction of a house, or a horse died or something like that. People would come and help each other. So these Sunday ceremonies or these Sunday gatherings in the church and stuff initially also became a point of thanksgiving to the community, where people who are coming to the church, who are submitting to the God, they're listening to the Bible, and out of their good heart, they are also extending support to each other. Initially, it was only about the white communities, but as time changed and more people from different backgrounds, not as enslaved, but as immigrants, came to this country, they were also incorporated over the societies, whether it is South Asian, whether it is North Africans, whether it is other parts of the country, all of them, they were working together, and as a consequence, they became a part of the society. And there was also this thanksgiving in that particular sense, where they were exchanging, greetings with one another, extending help. In a new strange country, it is very important that people live in coherence with one another, so that they can extend their support to one another. So in this hostile environment, as this continent and country shaped into more and more, people started and cooperating, helping with one another. The more you could help with one another, the better you are in survival, because there were wildlife, there were attacks from Aboriginal people, there was lack of food, there were often drought, there was hard winters and stuff. So the more coherent peoples were, they were better successful. Even if we look into our villages, you will see, compared to our towns and cities, people living in our, even in these days in our the village, are more tolerant of one another and more supportive of one another. They may quarrel with one another at this point too, but at the same time, if there is a problem, there is an emergency, whether it is sorrow, whether it is sharing, whether it's a birth, whether it's someone's death,
in the community. Everyone in the rural communities come together, which does not happen in the city areas and stuff. But initially, during shaping of our civilization, humanity, as well as the colonization of Europeans in these countries, this help that they received, and through coherent support towards one another, they established a civilization. And overall, ultimately, over hundreds of years, these civilizations strengthened. And today, America is America, what America has become. So there is, for the forefathers or who are pioneers who came in the early days of the formation of the country, who took long steps and many sacrifices, many deaths, many fights, and ultimately established this great country, is a part of this Thanksgiving. They thank their ancestors, they thank their forefathers, they thank their colonial great 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 grandparents who came to this country, which we may have wiped out from their memory, but it's still a part. So this is how the Thanksgiving is looked upon in the Western countries. But it has now been extended, it has now been expanded, the meaning has accentuated in various other cultures and stuff. And now we also have distinct days, internationally recognized as International Day of Thanksgiving, where we learn to appreciate the help that is extended to us by others and appreciate by thanking them. And it creates a better environment, it creates a better society, and it creates a better next generation. Unless our next generation learns to be, learn to make sacrifices for others, unless they feel to work with others, to help others to also flourish, we ourselves could not flourish in that particular senses. Selfishness has become a cornerstone of our urban society. Like we are almost only looking for our own goals, own objective, own success, and our own small circle of happiness. But beyond that, a particular selfish circle is also a broader circle, where if we extend our help, we get 10 times more help that is coming to us, and we need to acknowledge that by thanking others, by thanking and appreciating others for all the supports and helps that has been provided. I am grateful to my parents for the support they provided me. I think it is because of them that whatever I am being able to do today, it is through their blessings, through their hard works, and through the education and other opportunities they provided for me, that has helped me to survive, and also to do the best of my ability under various circumstances and stuff. And the same is for others. Everyone has got some help from others, and the family is a cornerstone in that particular unit. So we are grateful to our family, particularly our parents, for helping us to come so far. And we are continuing to move forward as humans, as society, as community. And we must be thankful to one another. Thank you very much for giving me an opportunity to explain the basic philosophy of the Thanksgiving Day, as it's a culture that has percolated from the West into our East, but now it is an universal culture. Thanksgiving has now become an international culture of appreciating help from others and appreciating others extending their help. Thank you. I think Suparna Madam has been able to join. So I conclude my presentation here. Agnihotriji, thank you very much. Thank you for the opportunity provided. Thank you, thank you. Today it is overall thanks and thanks always to each and every person for each and every work and support provided by you to our this very webinar platform. Thank you so much. Well, now I would like to invite our next guest speaker, Dr. Suparna Sandal Mukherjee, for her great contribution throughout our webinar series for a couple of years. That's why tons of thanks for her favor, for her joining, for her giving a knowledgeful talk every time. Thanks so much, ma'am. And I welcome you. And please provide us your valuable talk on our Thanksgiving Day to this platform. Namaskar. Okay. Very good evening. Thank you again, once again, and really thanks for AYUSH SAMRIDDHI platform, who has enriched me in every aspects of my life and to give me opportunity to say something on this August platform. Today is the Thanksgiving Day. It's observing all over the world,
and it is decided by the United Nations. And the same time, the United States, they discover or they celebrate the Thanksgiving Day on the fourth Thursday of the November every year. The fourth Thursday, today is the fourth Thursday of this November. So that's why we are observing this Thanksgiving Day. Thanksgiving is a federal holiday in the United States and celebrated the fourth Thursday. And especially in the November, in every year, they are celebrating Thanksgiving. So it is known as the American Thanksgiving, at the same time, the Canadian Thanksgiving, such and such. And why this Thanksgiving Day used to be observed? So it is there is a history on it. So when the modern national celebration dates was this 1800, 1863. That means it was first been observed and has been linked to the pilgrims of 1621's Harvest Festival. And since then, the 19th century, it has again started for this Thanksgiving. That is the day of the fourth Thursday of the every year. It is observing the Thanksgiving. And why this Thanksgiving? Thanksgiving, not only that you are telling me something, I am giving you the thanks. Not that it is a behavioral aspect and it is the scientific acumen. What you are telling and why you are thanks and going to give the thanks, that is the behavioral senses. So giving some respect to the someone, it is also a thanksgiving procedure. And it is very interesting to each and everywhere when we are surviving and when we are giving thanks to the all the persons in this world. So everywhere, if you can share it thanks, so it means the very lot. So whenever you, if you have the breakfast, if you getting any kinds of dinner, lunch from someone, you are getting something from someone, some help from someone, you should give the thanks to them, because thanks is a very scientific acumen, because it's come to your pituitary body, and this pituitary body will give you some sensation, then the share of customs. And this Thanksgiving, always the prayer song, we are providing thanks to the God, because God, whatever you have provided me, it is a thanks to you, because you have provided me. That's why I am getting these chances. I am also in this context. I am also providing thanks to Ayush Samriddhi platform, and also thanks to my previous speaker, Dr. Shekhar Basu, who has introduced me here on this August platform. At the same time, Ayush has given me such an opportunity, provide me such an opportunity to say something on the aspects, because it is thanks for the every aspect, just because so I can enrich myself and I can develop my skills on this platform. So this is my another opportunity to say something on this platform. So in that case, it was also started in the Turkey. Usually, the roasted and stuffed food they used to provide, and with the thanks. Whenever we can offer something like this, our sacrifice with the thanks. So when we are doing puja time, we are also providing thanks to the God, that God has given me such an opportunity to do this rituals and customs. So there is in Turkey, in Indonesia, in other parts of the world, they also provide thanks with the smashed potato. In the holy time, we used to celebrate the potato burning, and this is also with the thanks, because that time it is very good for the health, and we can protect ourselves from various kinds of ailments. So these are also thanks, because we are giving thanks to our nature,
And moreover, we are sharing thanks to the Mother Earth, because the Almighty has giving us the surviving in this world. That's why we are surviving. Otherwise, it was impossible to survive in this world. So that's why we are providing thanks to the Almighty to provide such an opportunity to survive over here. Because without, like the dinosaurs, they cannot survive in this world, but we are still surviving. So this is it should needed the thanks to the Almighty. And whenever you are feeling joy, you are going to give the thanks. So you are, when you are meditating, you are also giving thanks, because thanks is your cognitive sense behavior and cognitive senses, which can enrich you in each and every platform to provide you and to give you the better betterment of your life and the better accommodation in your life. Without thanks, there is nothing is possible. So the thanks will the part which can please you. We can give you the some good concession, some good initiation for you, for feeling for you, for if you don't know anyone, but if you provide thanks, they will give you the person will think for you for a while, at least for a moment, at least they think that yes, the person is a very good gentleman, or it is also the person who is behaving with us with the thanks. So with the thanks, so it's mine. It is solve your all problems, because the problems is always creating by the system orientation, and by this thanks you can solve your problems. So thanks is a very good important scientific acumen in this 21st century. With this thanks we can provide everything. And in this cases I can emphasize that this thanks is a person's inner senses, inner acumen. If you have provide thanks to the persons also who are angry with you, or who are wanted to give you some some kind of yeah, nonsense, or some kind of abusement, or some kind of you want to stoop down you. So if you can behave properly with the thanks, but after doing this abusement, no, before doing this abusement, if you share the thanks to him and you can do the good thing for him. Those who wanted to do the bad thing for you, you should do the good thing for him. With the thanks, the person would not do any kinds of bad things and any kinds of abusement with you. So we can do the everything, every aspects of our life with this thanks. The thanks is also a very important part of our life. Thank you very much. Thanks to giving me such an opportunity to say something. Thank you. रियली थैंक्स, रियली थैंक्स। आप लोग बोलते हैं तो लोडेड मैगजीन की तरह बोलते हैं, मालूम नहीं पड़ता कब, कितना संगीत की तरह। शर्मा जी भी, आप भी, सैकत जी भी, रामवीर जी भी, तो हम लोग तो है ही अग्निहोत्री सर। हम बहुत अच्छा बोलते हैं मैडम, रियली ग्रेट। कल 3 बार आपको सुनेंगे, 3 वेबिनार में। कल हमारी थैंक 4 वेबिनार हैं, तो इसीलिए आधा आधा घंटे, क्योंकि एक ही बात देखी मैंने सर, पूरे स्पीकर्स में से टाइम कॉन्शियस यदि कोई है तो ये दोनों हैं, सैकत जी और सुपर्णा जी। अलार्म फिट है दिमाग में कि कितने मिनट बोलना है और कब रुक जाना है। ग्रेट, रियली ग्रेट एक्सपीरियंस आप सभी के लिए। रामवीर सर, मैं भोलेनाथ को थैंक यू देना भूल गया, और माँ बाप को भी सर। ये बात सैकत जी ने बिल्कुल सही कही कि हमारा इष्ट जो हमको जीवित रखे है, उसको सबसे पहले धन्यवाद। और उसने जिस घर में पैदा किया, और जहां हम हैं वो बिना माँ बाप के नहीं होते। तो मैं अपने पूरे पूर्वजों को और माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ, और आदरणीय रामवीर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ इस विषय में। जी आदरणीय भाई जी। रामवीर, जी भाई जी, सबसे पहले आपको भी थैंक यू। तो थैंक यू की मुझे बात चल कोई रही है। मुझे सब देना भूल जाते हैं सर, मैं क्या करूं। मैं ही कोई खुद बात नहीं। बोलता रहता हूँ ना सबको धन्यवाद, तो तो मुझे लोग बाग देना भूल जाते हैं, मैं क्या करूं। मुझे शौकत जी का जो स्पीच सुनने मिली, तो उसको कुछ चीजें मैंने उसमें से ऑब्जर्व की।
एक ऑब्जर्व ये किया कि जिन लोगों ने पीड़न किया था, पीड़ित करने वाले लोगों ने पीड़ित लोगों के लिए धन्यवाद कहा। जो साउथ अफ्रीका में गए, जो वहाँ पे ब्रिटेन से गए, जो बाहर से लोग गए, वहाँ की कल्चर को उन्होंने यूज किया, वहाँ की नदियों को यूज किया, वहाँ की सोसाइटी को यूज किया, वहाँ की टेक्निक को यूज किया। तो जिन लोगों से उन लोगों ने चीज की गिरफ्त की थी, दिया था, उनको धन्यवाद कहा। वो कब शुरू किया? उन्होंने 1856 में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में शुरू किया। मगर हम लोगों की, आपने पवन जी ने बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों के अंदर एक एक नहीं होने की वजह से नेक नहीं हो पाए। हम लोगों ने अपने त्योहारों को, हमारी चीजों को बांट दिया। हम हर चीज की, हम इसको धन्यवाद नहीं कहते हैं। धन्यवाद शब्द बाद में आता है, सबसे पहले आती है कृतज्ञता। तो हमारे तो हिंदुस्तान में कृतज्ञता इतनी गूढ़ भरी हुई है। हम पेड़ों की कृतज्ञता से भी आगे पूजा, धन्यवाद से भी आगे पूजा करते हैं। तो हम पेड़ की, वृक्ष की पूजा करते हैं, हम जानवरों की पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा करते हैं। ये कृतज्ञता ही है। जो भी हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे बाद शरीर के अंदर यानी हमारी जीवन के लिए आवश्यक है, उनका सबका कृतज्ञता करते हैं। मगर हम अपनी बात को सही तरह से नहीं रख पाए, इसलिए थैंक यू डे नहीं मना पाए। हम अपने पिता माता का ही पूजन नहीं करते। हमारी तो 7 पीढ़ियों के, जब हम गंगा जी नहाने जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हमारे अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं वहाँ, तो या फिर हम बनारस जाते हैं, तो वहां पर हम 7 पीढ़ियों के जो पंडित लोग होते हैं, जो हमारी 7 पीढ़ियों का लेते हैं, उनकी कृतज्ञता वहां पे करके आते हैं। तो हमारे जैसा कृतज्ञ, भारतीय जैसा कृतज्ञ तो धन्यवाद कहने वाला तो कहीं है नहीं, मगर अपनी बात को सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हमारे जैसा कृतज्ञता करने वाला, धन्यवाद करने वाला, हम हर पल पे, वो तो लोग संडे के संडे करते थे, हम हर पल पे, हर क्षण पे, हर श्वास पे हमारे भगवान का धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उसको थैंक यू कहिए, हम कृतज्ञता कहते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। श्वास श्वास में पूजा है। तो भारत जितना धन्यवाद कहने वाला तो कोई कंट्री है नहीं, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो पल पल पे, हर श्वास में कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, थैंक यू कहता हो। तो थैंक यू शब्द जो है वो बाद की बात है, हिंदुस्तान का कहीं भी कोई तोड़ नहीं है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में जो है वो कहीं नहीं है। मगर पवन जी की इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, हम एक नहीं है, नेक हैं, नेक नहीं है, बटे हुए हैं, इसलिए अपनी बात को सही तरह से नहीं रख पाए हैं। वही बात हम हर जगह रख रहे हैं। तो एक करके बनते, सभी देशों ने, जितने गोरे लोग हैं, उन्होंने, सब लोगों ने इस चीज को अपना लिया, थैंक यू डे को। मगर हमारी एक चीज को हम अकेले हिंदुस्तानी नहीं अपना पाए, इसलिए हम अपनी बात को नहीं रख पाए। आप लोगों का फिर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, थैंक यू नहीं, हम आपका कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, हम आपकी पूजा करते हुए, हम अपनी सृष्टि की पूजा करते हुए और बुद्धिमता आचार्यों की पूजा करते हुए सभी का कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद बाद की बात है, उसके बाद में आता है थैंक यू वेरी मच टू गिव मी ए थैंक चांस यू टू साहब। स्पीक माय मैं तो पॉइंट। ये जानता हूँ, उनने शोषण करने के बाद थैंक यू करा, तो या अपने घनिष्ठ लोगों को किया। हमारे जैसे वो रुद्री है, तो रुद्री में तो हम पंचम अध्याय में सबका नमो करते हैं जितने हैं। हाँ, मतलब किन किन को नमस्कार करते हैं हम, यही हमें नहीं मालूम कि किन किन को धन्यवाद देते हैं। तो सर्वेभ्यो नमो वाकई नमः। है। सर्वेभ्यो नमो नमः। हाँ, सर्वेभ्यो नमः। जय हो पानी को उनकी। नमन, पत्थर को नमन, गगन को नमन, सबको हाँ नमन करते हैं। और फिर भी हाँ, अपनी बात को हम थैंक यू तक नहीं पहुंचा पाए, अंतर्राष्ट्रीय डे पर नहीं मना पाए। नहीं मना पाए, क्योंकि यही है हमने बात। उसको धर्म से जोड़ दिया। ये गड़बड़ हो गई। हाँ, ये हिंदू धर्म बिल्कुल से गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमारा धर्म मानता है, हमारा दूसरा नहीं मानता। तो धर्म इसलिए हिंदू हमने धर्म से जुड़ हमारे दिया। मंच में सब दिन मनाना शुरू किए। वो या ईद होती है तो मनाते हैं हम यदि कोई पारसी का होता है तो मनाते हैं, हम सबका मनाते हैं। हमें हर के खुशी में खुश होने की आदत पड़ गई है। हम हर एक हमारी की कोई खुशी चिंता में खुश नहीं। हैं। थैंक यू चलिए, थैंक बहुत अग्निहोत्री सर। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आई। और कुछ चीजें तो इतनी बढ़िया निकल के आ रही, जहां से हम चले हैं, आदरणीय रामवीर जी ने जो कह दिया वो कुछ ऐसा बन गया। सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर सुपर्णा सन्याल जी का, उनके इस टैलेंट का थैंक यू, धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकाशित करूंगा कि वो अपनी वार्ता को टाइमली कंप्लीट करती, फिर नहीं करती, कंप्लीट करती। ये उनका स्पेशल टैलेंट, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया। लेकिन उससे आगे चले, जब आदरणीय रामवीर जी ने कहा कि कृतज्ञता प्रकाश करते हैं, अब देखिए कृतज्ञता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा, जब स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं
अपि श्रवणमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये किसके लिए कह रहे हैं? अपनी उस जन्मभूमि के प्रति कृतज्ञता प्रकाश कर रहे हैं कि हमें वहां जाना है। और गायंत देवा किलगीत गानी धन्यास्ते भारत भूमि भागे। वे लोग जो भारत में पैदा हुए हैं उनके लिए देवता लोग जो है वो धन्यवाद करते हैं। कृतज्ञता प्रकाश की तो गहराई इतनी गहरी है कि देवता तरसते हैं कि आप इस भारत दूत में आके जन्म ले सके। तो अपन लोग निश्चित रूप से अपने फोर फादर्स को धन्यवाद इस बात को करेंगे कि उन्होंने इस पृथ्वी पर, ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने इस पृथ्वी पर हमको मनुष्य योनि में यहाँ पर जन्म दिया और हमसे तरह तरह के जो अच्छे कार्य और अच्छे व्यक्ति, अच्छे संस्कार देखने, सुनने और स्वीकार करने में मिलते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। सच्चाई तो ये है कि ये उनकी ही के प्रति हमारी सबकी पेड़ पौधे पुष्पों सबके प्रति ही है हमारी कृतज्ञता प्रकाश है कि अगर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, ब्राह्मी ये सब न होती तो सच्चाई की बात है हमारी यानी कितनी हमारी व्याधियां हैं जो इनके सहयोग से मिलने वाले सुख को या उपचार को नहीं प्राप्त कर पाती होती। तो हम लोग मानव मात्र के प्रति, प्रकृति के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति सबसे उनका कलरव, उनकी चहचहाहट, उसको सुन के जो मॉर्निंग होती है तो क्या वो किसी कम कृतज्ञता की बात है? तो अच्छा है मनुष्य रूप में हम लोग जो शब्द प्रयोग कर लें, कई बार हम शब्द रहित हो जाते हैं कृतज्ञता प्रकाशन में। वो भी एक बहुत परम स्थिति होती है। यहाँ पर शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए, वो भी परम स्थिति होती है। तो शायद हमारे IRES के मन के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि हम लोग वापस में क्या धन्यवाद करें। मतलब परमेश्वर जी कहते हैं ये लोग हमारे पिलर हैं। अब ये लोग, ये हमारे जो पिलर है हम लोग से जुड़े हुए हैं। और जब पिलर तो एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए, पिलर दोनों हट सकते ना हिल सकते हैं। वो तो पिलर, उनको भी तो बिल्डिंग खड़ी होती है तो पिलर को कैसे रोज रोज कहने, उनको कहने वाली बात ही नहीं है। पिलर तो पहले ग्राउटिंग की जाती है, जमीन के नीचे 7 फुट के नीचे से लाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, फिर तो बिल्डिंग की जिंदाबाद बोली जाती है। पिलर तो फाउंडेशन चले जाते हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत उपकार है। हम लोग आप अपने को 4 उपकृत टॉपिक और दे दीजिए सर, अनुग्रहित। अभी मैं फाइनल प्रोग्राम कर मैं रहा हूँ। मनीष की देखो, मैं मनीष का कंसेंट आ गया शायद। मैं अपना, मेरे होश ही नहीं, मैं अभी आके घुसा हूँ और बैठ गया हूँ। टाइम अलॉटेड हाउ मेनी मिनट? हाँ, ये मनीष के यहाँ आ गई है। तो फोटो डिटेल चाहिए, यहाँ से थोड़ी होगा सर। भैया मैंने जोड़ा भेजा था आपको, हमने दिन में ही अकाउंट जोड़ा है उसका, जैसे ही मैं देखता हूँ सर। पहले के लिए। हाँ ये देखिए, ये रहा।